Hello everyone, I welcome you all to Biology Lessons with Kalyani. Today we are going to start with a brand new topic, that is Biomolecules, chapter 9 from CBSE Biology class 11 book. Under this we are going to cover how to analyze chemical compounds. Now biomolecules chapter ta bahut samasyanku difficult lage, but I'll try that it's very interesting and the concepts are very clear for everyone. Let's move on to the slides. Biomolecules. They are basically biological molecules or the molecules produced by living organisms that are essential for life processes. ता माने हेला लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मॉलिक्यूल्स गुडा को प्रोड्यूस करंती आउ जो गुडा तांकर लाइफ प्रोसेसेस पाई दरकार हुए तांको आमे बायोमोलिक्यूल्स को दे आर कार्बन कंपाउंड्स व्हिच वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू रु जो कार्बन कंपाउंड्स गुडा आमे ऑब्टेन करू ताको आमे बायोमोलिक्यूल्स कहू था जदि आमे types of biomolecules देखिबो, there are four main types of biomolecules: carbohydrate, protein, lipids and nucleic acid. Relative abundance आमे जदि देखिबो, which is nothing but केते percentage of biomolecule is present in the cell, ताहले carbohydrate रो cellular abundance है 3%, protein रो 10 to 15%, lipids रो 2% and nucleic acid रो 5 to 7%. 80 important question asi paribo, which biomolecule is most abundant? Answer of protein, right? 10 to 15% achi cellular mass ro. Semti jodi pachara jiba, which biomolecule has the least cellular abundance? Answer will be lipids. Now, बुले के जदि पचरा जीव, arrange the biomolecules as per the cellular abundance. Answer would be proteins followed by nucleic acid, carbohydrate and then lipids. तो ए स्लाइड रे हमको तीनटा कथा मन रखियार अछि: biomolecules definition, types of biomolecules, cellular abundance of the biomolecules. Clear? Next slide देखिबा एबे. आमे जदि गोटे लिविंग बीइंग नबा आउ नॉन लिविंग मैटर नबा, what is the underlying difference between them? For example, आमे जदि plant tissue, animal tissue, microbial paste नेले आउ compare कले earth's crust रो, ताहले what is the underlying difference? ताकू find करिया पई we can perform the elemental analysis. Elemental analysis is nothing but we check the different types of elements present in that sample and their content per unit mass. माने आमे गोटे sample रे check करू कि को elements present अछंती आउ तांकर केते percentage रे से माने अछंती per cell, the cell or the sample mass. Clear? तो आमे कौन ऑब्जर्व कले? आमे दीटा जिंस ऑब्जर्व कले. फर्स्ट हला both living being and non-living matter have almost the similar list of elements in them. ताले कौन difference which makes a living being living? Difference lies with respect to the relative abundance of the carbon and hydrogen, which is very high in the living beings. तो कौन हुए ना लिविंग बीइंग्स रे कार्बन आउ हाइड्रोजन रो परसेंटेज एबंडेंस ता बहुत बेसी. ताकू सपोर्ट करिया पे वी हैव अ डेटा व्हिच इज फ्रॉम CNR राउस लैब. तो से गोटे एक्सपेरिमेंट कले एंड परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी को कंपेयर कले. कौन से देखिले जते बेले से हाइड्रोजन और कार्बन रो परसेंटेज वेट देखिले
Earth's crust rate it's very less, whereas in human body it is very high, that is 9.5% and 18.5 percentage. Clear? तो next जिनस सी भी कौन ऑब्जर्व कले ऑक्सीजन रा परसेंटेज टा बोथ अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी रे बेसी किंतु again the percentage weight of oxygen for living beings is more than the non living matter. तो आमर कौन क्लियर एठी दीटा पॉइंट आमर एठी मने रखिबार अछि लिविंग बीइंग हैव higher relative abundance of carbon, hydrogen and oxygen. Among them carbon and hydrogen is more important. And jodi pachara jibo which element is present in highest percentage or has the highest abundance in a living matter, तो तारा आंसर हबो ऑक्सीजन. एटा दीटा पॉइंट हमको मने रखियार अछि. क्लियर? आउ गोटे कथा कौन अच्छी ना अर्थ क्रस्ट देख ये तुम सिलिकन अच्छी 27.7%. आमर ह्यूमन बॉडी रे सेटा देखा जाउची कि दैट इज वेरी नेग्लिजिबल इन केस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. So these three things are the underlying difference between the living being and non-living matter. I hope that's clear. Let's move on to the next slide. Analysis of chemical composition. आमे जदि गोटे मैटर नबा ताकू आमे टू वेज रे एनालाइज करि परिबा तार केमिकल कंपोजिशन को. फर्स्ट वे हला एलिमेंटल एनालिसिस. दैट इज नथिंग बट गोटे सैंपल रे आमे देखिबा व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट आउ तांकर परसेंटेज वेट पर मास केते अछि. सेकेंड आमे कोन करि परिबा ना आमे देखि परिबा व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट. माने गोटे सैंपल रे कोन कोन इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स अछंती आ को ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट अछंती आ तांकर परसेंटेज कंपोजिशन केते. राइट? तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आमे जदी देखिबा तारो एठी गोटे टेबल रे दिया हेची. एग्जांपल्स कौन कौन है परिबो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, phosphate, sulfate. These can be the example of the inorganic constituents. Organic constituents कौन है परिबो sugar है परिबो, amino acid है परिबो, lipids and fats है परिबो, nucleic acid है परिबो जहां अंडर nitrogenous bases, nucleoside, nucleotide सब है परिबो. Right? एठी हमको जदि पचरा जीवो which inorganic constituent has the highest abundance in living tissue, तार आंसर कौन हबो? तार आंसर हबो water. Right? Most of our body is composed of water. That's another point which we have to remember. I hope this is clear. Further हमें देखिबा how organic compounds are analyzed. How to find the type of organic compound in a sample. For that, we have to use trichloroacetic acid method. What is this? Let's find out. So, we take a living tissue which can be either a vegetable piece or we can take an animal cell sample such as liver. तो आमे कौन करिबु से लिविंग टिश्यू को आमे मोटर एंड पेस्टल ने की बहुत भलो भाबरे ग्राइंड करिबु with a solvent. What is the solvent we use here? The solvent we use is trichloroacetic acid. Formula कौन तारा CCl3COOH. This is very important. तो ए सैंपल को जोटा आमे TCl सहित भलो रे ग्राइंड कलु. What do we obtain? Thick slurry. तो ये जो slurry टा हमको मिलेला, we pass that through a cheesecloth or a cotton. Compare करी परिबा आमे जेमती चा छानला बेले गोटे छाना यूज करू. राइट? सिमिलरली आमे से थिक स्लरी को गोटे चीज क्लोथ आउ कॉटन द्वारा छानी नबु, स्ट्रेन करी नबु. So what happens? जहां भी larger particles अछंती, they are retained or don't pass.
that is called as retentate. Now, जोड़ा smaller particles अछंती, they pass through the cheesecloth and we call it filtrate. It is present in the jaha bhi hame container nochu tadre that passes through and present in the bottom, right? So एटी आमर trichloroacetic acid retentate or filtrate is very important. Further हमें कौन करि परिबु सेपर जो filtrate fraction हैला और retentate fraction हैला सेदरे different component को separation आउ analytical techniques use करि परिबु सेटा हमर नाही सेटा हमें हायर स्टडीज रे पढिबु तो ए एनालिटिकल टेक्निक्स रे हमें एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज करिकि सैंपल्स मानकर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फार्मूला बाहर कर पाए क्लियर एबे हमें डिटेल रे जो फिल्ट्रेट और रिटेंटेड फ्रैक्शन मिलिला ताको देखिबा हमें देखिले हमको टू फ्रैक्शंस मिलिला जो the filtrate that is soluble in the trichloroacidic acid तो से fraction को हमें acid soluble fraction कहि पारि ए acid soluble fraction रो कोन साइज ता छोटो थाए राइट तांका साइज ता around 1000 dalton थाए आउ रेंज जदि हमें देखिबा that is about 18 to 800 dalton तो जेहेतु से माने स्मॉलर इन साइज और पास करी जानती चीज क्लोथ थ्रू तो से टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को हमें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहि परिबो माइक्रो माने छोटो सेत लगे हमें ताको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहू एग्जांपल कोन कोन हे परिबो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल रा अमाइनो एसिड्स हे परिबो सिंपल शुगर हे परिबो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस क्लियर आउ सेकंड फ्रैक्शन हमर कोन मिली थिला रिटेंटेड मिली थिला व्हिच इज नथिंग बट द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन काहे कि ना से सॉल्युबल हेलानी आउ तांकर साइज भी बड़ तो से पास कलानी थ्रू द चीज क्लोथ साइज जदि हमें देखिबा रिटेंटेड रो साइज टा इज मोर देन 10000 डाल्टन कोन कोन एग्जांपल हे परिबो एठी प्रोटीन्स हे परिबो enzymes हे परिबो पॉलीसैकेराइड्स हे परिबो न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज डीएनए और आरएनए हे परिबो एटी लिपिड्स भी रिटेंटेट रे देखा जाए बट लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलेक्यूल काहे कि हमें एटा गोटे डिटेल रे देखिबा देखो लिपिड्स जो थांती तांकर जदि हमें इंडिविजुअल साइज देखिबा दैट इज वेरी स्मॉल 800 dalton so ideally lipid को हमको filtrate किंबा acid soluble fraction में मिलिबा कथा but we get it in the retentate fraction why ताकू बुझिबा पई हमको बुझिया को हबो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो स्ट्रक्चर जेते बेले हमें को भी टिश्यू को ग्राइंड करू that tissue sample also contains the cell membrane and cell membrane रो nature lipid और protein तो से lipid bilayer थाए एबे लिपिड्स मानकर स्ट्रक्चर को जदि हमें देखिबा दे कंसिस्ट ऑफ अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड अ हाइड्रोफोबिक टेल द हाइड्रोफोबिक टेल ता जो थाए दैट इज वेरी अनस्टेबल इन एक्वस एनवायरनमेंट तो कौन हुए से लिपिड जो थांती बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल दे टेंड टू फॉर्म an aggregation or vesicle तो से माने सर्कुलर स्ट्रक्चर्स करी दियंती एंड हाइड्रोफोबिक टेल से मानकर भीतर पट को रही जाए so that it doesn't interact with the aqueous environment ए वेसिकल्स मानकर जदि हमें देखिबा साइज ता बहुत बेसी थाए which is more than 10000 daltons तो एबे कोन से ता भी चीज क्लॉथ भीतर पास करि परिबो कि एबे आ वेसिकल गुडा पास करि परिबोनी That's why lipid is present in the retentate fraction. Also, these larger size vesicles become insoluble in the acid solution and don't pass through. That is the reason even though lipid is not strictly a biomacromolecule, still it is present in the retentate or the acid insoluble fraction.
This concept is very, very important. I hope that's clear now. Right? Let's move on to the next slide. How to analyze inorganic constituents. पूर्व स्लाइड रे आमे देखिले ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स केमिति आमे काढी परिबा. एबे देखिबा आमे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ सैंपल केमिति डिटरमाइन करि पारि. For that we have a technique called as ash analysis. Ash analysis technique is a highly destructive technique. कहीं आमे destructive technique कहू because एदरे सैंपल को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और बर्न कर दिया जाए. राइट? कौन हुए ना गोटे लिविंग टिश्यू आमे नेलु, आमे लीव सैंपल नहीं पारिबु और गोटे एनिमल रो लिवर सैंपल भी नहीं पारिबु. लिवर छड़ा भी आमे अलगा किछि सैंपल नहीं पारिबु. और देन आमे कोन करिबु ना तार वे करिबु. As such जदि गोटे सैंपल को आमे बिना ड्राई करिकी वे करिबु तार वेट टा को आमे कहू वेट वेट. राइट? नेक्स्ट हला आमे तक से सैंपल को भी subjected to very high temperature or be dried. Then what will happen? Water evaporates out and the sample is dried. That weight is called as dry weight. एबे क्लियर हैला वेट वेट और ड्राई वेट रे डिफरेंस. कंसीडर जदि टमाटो नेला, टमाटो को आमे जदि विदाउट किछि करी कि तार सैंपल वेट चेक करू, देन आमे ताको ड्राई करी दे कि चेक करू, तो ड्राई कर सला परे वेट ता डिफरेंट होबो कि नहीं. तो विदाउट ड्राइंग हैला वेट वेट और ड्राइंग कर सला परे हैला ड्राई वेट. ड्राइड सैंपल हे साला परे हमें नेक्स्ट स्टेप कौन करू ना हमें फुल्ली बर्न करू से सैंपल को. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव टेक्निक. तो कौन हुए बर्न करिले जहां भी कार्बन कंपाउंड्स थांती से सैंपल रे दे बिकम्स they oxidize and they lead to formation of carbon dioxide and water vapor. एबे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर तो बाहर ही जाए, तो what is remaining? Remain करे ash, which contains the various inorganic matter. तो ए ash को जदि हमें analyze करिबो further techniques रू spectroscopic technique रू जेमति NMR हैला और other advanced spectroscopic techniques रू हमें जदि देखिबो ताहाले हमें inorganic constituents और तार formula तांकर ratio सब किछि find करि पारि. So that is how we perform the analysis of analyze the inorganic constituents. I hope you understood how we perform the analysis of organic as well as inorganic constituents of a sample. Next class we'll be studying about amino acid. Now if you like the video, then please like, share and subscribe. मु एपर्यंत किछि बेसी सब्सक्रिप्शन देखि पारनी, so please subscribe it, share it, like it so that it gives me motivation to make new videos. Thank you everyone. Have a good day.